Okay, so hello everyone. Welcome to this new episode of The Brainery. The topic for today's discussion is unlocking the benefits, exploring life insurance essentials. बचपन से हम टेलीविजन में लाइफ इंश्योरेंस का एडवर्टीजमेंट देखते आ रहे हैं, तो तब हमें शायद ये समझ ना आया हो, लेकिन क्योंकि हमारे पास अब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो अपनी फैमिली को लाइफ इंश्योरेंस से सिक्योर करने की जो समझ है वो हमें अब है। लेकिन अगर आपके मन में बहुत क्वेश्चंस होंगे कि ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्चुअली क्या है, कैसे काम करती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो अगर आपको ये क्वेरीज हैं, नो वरीज। आज लाइफ इंश्योरेंस को इजी बनाने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर अर्पित नागड़ा। सो वेलकम सर। ही इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अम्ब्रेला मनी. He has deep interest and understanding of financial markets, macroeconomics, financial inclusions, and equitable growth. Hello and warm welcome, Mr. Arpit. How are you? Doing good. Thank you. Thank you for having me here. Okay, happy to hear that. My very first question comes to you is that what is life insurance and why it is important? Yeah. So I think, life insurance as instrument is probably one of the most important instruments when it comes to personal finance, right? Uh, you know, when we plan for our, objectives, goals in life, right? You're planning for your family, you're planning to take care of your children education and everything, right? One of the biggest risks that we always run is what if the person who's sole contributor in the family or earning member in the family is no more, right? Life insurance basically is an instrument that sort of protects that risk, right? Financially. Obviously, while nobody can protect the risk of somebody's life, but at least the financial risk arising out of somebody's demise can always be protected. And that is what essentially life insurance does. Okay. So this, if you were to look at it in legal terms, it's basically a contract between, let's say, me, an individual, right, and the insurer, right? Wherein, I pay a lump sum amount to the insurance company and ask them, ki, hey, I want my life to be secured. I want all the financial risk associated with my life to be secured, and in return of that, I think there's some mic on or something. Yeah, and against that, the insurer actually basically they give you they guarantee the sort of a maturity benefit or a life benefit to you against that premium that you pay to a life insurance company. Thank you. So my next question is that what are the primary types of life insurance policies in India? So essentially, if you were to look at life insurance, you have two broad categories, right? You look at term life insurance, which is a plain vanilla life cover insurance, right? And the other one is which is a permanent life insurance where, endowment plans and all these, subcategories fall under that. Okay, so can we say so there is the one permanent term insurance, permanent life insurance plan, right? So can we call that whole life insurance plan also? Yeah, you can. So basically, what happens is, see, there are two ways of looking at it, right? There's one way which is our typical psychological way of looking at it, wherein I'm giving 1 rupee to, let's say, Shalu, and I expect, Shalu takes that 1 rupee to me. She should not just give me a risk cover against my life, but she should also be able to give some money back to me. Right. When you get into that kind of relationship, right, this is basically your non-permanent or a wholesome life insurance plan, right? But if you were to look at term insurance as an insurance plan actually has only one objective, and that is I pay 1 rupee to Shalu every year and ask Shalu, hey Shalu, if anything happens to me during the course of this 1 year, okay, you're supposed to not just pay me back the 1 rupee, but the risk that you're covering. And that risk coverage can be much higher in term in life insurance. But let's say after 1 year, if I do not renew my plan next year, Shalu is not supposed to or is not entitled or liable to pay me anything, right? So that's how the term life insurance, just to put it simply, is just a simple plain vanilla coverage for your life, wherein you pay a premium to somebody and somebody gives you a risk cover, and it is only and only fructified if somebody passes away. If you don't pass away, nothing happens, right? If you don't renew it next year, nothing happens. The term or the entire agreement falls apart. Okay. On the other side, if you have let's say your permanent life insurance, you keep paying premiums over a period of time, which can be 5 years, 10 years, 12 years, 20 years, 30 years. You can decide, right?
and then you pay a certain amount of money to the insurer, right? Against which insurer gives you two benefits. One is your life benefit. Let's say during the course of this entire, and you can be insured for 100 years, right? So if anything happens to you during the policy tenure of 100 years, the insurer will pay you money, right? That's one. So even, and you could pay your premiums only for first 10 years, but still you could be covered for 100 years, which is not applicable in your term insurance. And the second one is that, let's say you survive, nothing happens to your life, right? Then also there's something called maturity benefit that you get, right? So from Indian psychological point of view, one of the most sort of flavorful product today is actually, which is where LIC leads their entire insurance pocket, that is endowment plan, because Indians love to see that I don't want my 1 rupee also to go waste. I have to receive something against that, right? And this is where a lot of people actually opt for your permanent life insurance. Thank you. So we talked about permanent life insurance. So how it is different from term insurance? क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्या है और ये होल लाइफ इंश्योरेंस या परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस क्या है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? Correct. So term life insurance, like just to put it simply, is like let's say when you want to eat ice cream, right? You go for vanilla ice cream, which is like कि बस ice cream ही खाना है, right? Term insurance is basically everything apart, सब कुछ side में रख दो. Only one thing, and that is that I want to only cover for the risk of my life. That's about it, right? So you pay somebody, let's say 25,000 rupee every year, right? And you tell that, give me 1 crore life cover. So during this entire 1 year, if I pass away, right, you're supposed to pay to my family 1 crore rupee. So the beneficiary or in term life insurance can never be you yourself. You're covering the risk of your life. So beneficiaries will always be somebody who is your family in all probability, or anybody who you choose to be the beneficiary of your, in case of your death, right? So it's a simple agreement wherein you only, your beneficiaries get the benefit, you never get the benefit, right? And secondly, the benefit only comes in when obviously the person who is insured is no longer alive, right? And like I said, on the other side, in order to understand the difference, the beneficiary can also be you yourself, right? Which is the permanent life, which is where I said that survival benefit or maturity amount, right? You could be alive, right? And you can still, if the policy matures after 20 years, 30 years, depending on the policy tenure that you opted for, if you're still alive, the insurer will still give you money. Okay. Right? So that's how it works. That's maturity benefit, right? Right, correct. Okay. तो अगर तो इट मींस कि जो टर्म इंश्योरेंस है वो आपको सिर्फ डेथ बेनिफिट प्रोवाइड करता है. Absolutely. Simple. Correct. Correct. Okay. Correct. Fine. So one more question comes here about tax benefit. So in life insurance policy, how can we get tax benefit? Yeah, so that is very important because it's also important to, whenever you meet your clients, to tell them specifically, So there are two kind of benefits, tax benefits that you can get. One is, during the premium payment, right? Which is where, you can actually enjoy the deductions that are available under Section 80C. Okay. So under Section 80C, you can actually avail deductions up to 1.5 lakh rupees every year. So if your premium is, let's say, 1.5 lakh rupee, you can actually take, let's say if your salary is 10 lakh rupee, of this 1.5 lakh rupee is being paid as a premium for your insurance, you can take that entire 1.5 lakh rupee aside, right, under Section 80C. But there are further categories, subcategories, which actually restrict how much money you can actually cap for your insurance and, other plans on mutual fund investment like ELSs and so on and so forth, right? And these things, these brackets and categories keep changing over the year, but the tax benefit is available under Section 80C for your premium payments, right? The other one is when you receive the money, right? The maturity benefit, or let's say the, that benefit that, comes up, right? So that is also exempt from taxation under Section 1010D in India. So on both the sides, you have very good taxation available. And that's one of the reasons that, people still invest into such, insurance plans in India. Right. Also, I have a request that if you can be bilingual, like can use a little Hindi, that will be also good for Awesome, awesome. That would be great. Sure, sure. I thought I wasn't aware about the spread of your audience, so that's why I thought I'll speak in English. But that makes sense. I'm much more comfortable in Hindi. तो दोनों में mix बात करेंगे. Okay, so my next question comes with, can we take loan against the maturity amount of life insurance?
यस वी कैन राइट। सो दिस इज, ये सिर्फ और सिर्फ आपके परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस या फिर एंडोमेंट प्लान के लिए एप्लीकेबल है राइट, क्योंकि उस साइड आपको कोई लाइबिलिटी नहीं है फॉर द इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस के अंदर लाइबिलिटी नहीं है इंश्योरेंस को टू पे यू एनीथिंग राइट, इंश्योरेंस कंपनी के लिए। सो इफ यू लेट्स से डन अ टर्म इंश्योरेंस राइट, insurance companies do provide you a loan limit also depending on the amount of premium that you paid and company का payout ratio जो होगा। So generally on an average companies do provide 50 to 60% of the premium that you paid as your as a loan sanction on in the policies. Certain companies go all the way up to 80% to 100% also depending on how longer have you been paying these premiums, कितने टाइम से आप प्रीमियम पे कर रहे हो उसके लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। बट यस, लोन ऑप्शन इज अवेलेबल। पॉसिबल, ओके ओके, फाइन। तो एक और चीज, जब लाइफ इंश्योरेंस में हम इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, खरीदने का सोचते हैं, तो हमें लगता है कि कवरेज अमाउंट में कितना चाहिए, लाइक हाउ मच कवरेज डू आई शुड आई टेक फॉर माय फैमिली मेंबर्स। तो कैसे डिटरमाइन करना चाहिए हमें कि हमें कितने कवरेज अमाउंट की रिक्वायरमेंट है व्हेन वी बाय लाइफ इंश्योरेंस। आप कह सकते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो हमें माइंड में रखने चाहिए। या सो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आई थिंक वाइल थ्योरेटिकली बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखना चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में देखोगे देखेंगे, पर सबसे इम्पोर्टेंट दो फैक्टर्स हैं। सबसे वो इम्पोर्टेंट है आपका लाइफस्टाइल और आपका फैमिली कितना बड़ा है राइट, व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डू यू हैव। सो लेट्स से अगर कोई गांव के अंदर रह रहा है पर्सन एंड दे हैव अ फैमिली ऑफ 3 people, probably 25 lakh is also good enough right। let's say the risk of life is कि अगर मैं if I pass by right एंड मेरी फैमिली को एटलीस्ट 25 लाख 50 लाख मिलेगा, शायद दैट इज गुड इनफ। बट इफ यू आर लिविंग इन अ सिटी लाइक द सेम फैमिली इज लिविंग इन एंड दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स इन विलेज एंड एनीवेयर राइट। सो if they are living in city like Mumbai, lifestyle is obviously going to be different. You will have probably rental expenses, you will have other expenses of sending kids to extremely expensive school and so forth। So your lifestyle सबसे पहले is सबसे important factor right। सो the rule of thumb is that अगर आप किसी टीयर 1 सिटी के अंदर इंडिया के अंदर रह रहे हो तो एटलीस्ट 1 करोड़ रुपया आपका रिस्क कवर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर टर्म इंश्योरेंस लेना है तो 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, एंड अगर आप फिर एंडोमेंट प्लान ले रहे हो तो एटलीस्ट गो फॉर 20-25 लाख रुपी, जिसके अंदर आपको पैसा वापस भी मिलेगा फैमिली को, मेच्योरिटी का बेनिफिट और सर्वाइवल बेनिफिट अगर इफ नथिंग हैपेंस ड्यूरिंग द पॉलिसी टेन्योर। एंड दूसरा है कि आपको मतलब दैट लाइफ कवर भी मिलेगा। बट अगर प्योर टर्म की बात करें, सबसे बड़ा लाइक आई सेड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लाइफस्टाइल, दैट इज वन। सेकेंडली आपकी एज क्या है। ठीक है, अगर आप 40-45 के हैं ठीक है एंड आप अपनी लाइफ पे भी ले रहे हो तो हाईली लाइकली कि आपने ऑलरेडी 1-2 करोड़ की सेविंग करके रखी है लेट्स से बड़ी सिटी में अगर आप रह रहे हो। ठीक है, तो आपको फिर देखना चाहिए कि जस्ट इन केस देयर इज अ लेट्स से इफ यू आर नॉट अराउंड, अगर आप अराउंड नहीं हो तो आपकी फैमिली को और कितना पैसा चाहिए होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से यू कैन टेक अनदर 1 to 2 crore kind of sort of term life insurance। So these two are the key factors, and apart from that then what also weighs in if you are thinking कि हाँ मतलब you know how what are the things that you still have to do। let's say बच्चों की education है, you have to send your kids to US वगैरह कहीं, उनका कोई और आपका कोई already लोन चल रहा है हाउसिंग लोन which is not insured also and so forth। तो depending on ये आपकी लाइफस्टाइल, आपकी एज, उसके अलावा तीसरा आपको अपनी लाइबिलिटी भी देखनी चाहिए कि आज के टाइम पे मेरी लाइबिलिटी कितनी है। अगर आपके ऊपर 3 करोड़ का लोन है और आपने 3 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है तो वो इंश्योरेंस तो सिर्फ आपके लोन को फुलफिल करने में चला जाएगा एंड आपकी फैमिली विल बी बैक टू स्क्वायर वन कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो डिपेंड करता है इन 3 फैक्टर्स पे, उसके हिसाब से यू शुड एक्चुअली प्लान योर कॉर्पस और अच्छा, रिस्क एक और कवरेज। फैक्ट, हाँ, तो एक और फैक्टर है जो बोलते हैं इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन को भी हमें माइंड में रखना चाहिए, तो उसका क्या रोल है। या इन्फ्लेशन वेरी इंपॉर्टेंट राइट। तो सिंपल सबसे पहले ये बोला जाता है कि इसलिए सबसे पहले कि आप देखो कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, और लाइफस्टाइल का इन्फ्लेशन अलग अलग होता है। ठीक है, दिस इज व्हाई आई से कि लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर राइट। अगर आप गांव में रह रहे हो, आपका मतलब लाइफस्टाइल बड़ा सिंपल है तो इन्फ्लेशन डजंट हिट यू अलॉट। ओके, जनरली ऑन एन एवरेज इकोनॉमिक इन्फ्लेशन इन इंडिया इज 4.5 से 5%, दैट्स अबाउट इट, 5 से 6% की रेंज में रहेगा। बड़ी इकोनॉमीज में 1% का इन्फ्लेशन भी बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, इंडिया के अंदर 5 से 6, क्योंकि हम ग्रोइंग कंट्री है। ठीक है, तो 5 से 6% का इन्फ्लेशन रहेगा। बट अगर आप यूएचएनआई और एचएनआई है तो आपको 6% का इन्फ्लेशन नहीं लगेगा, आपका इन्फ्लेशन 10-12% का होगा बिकॉज यू लाइक टू ईट इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट,
ठीक है, आपका बच्चों का एजुकेशन फीस 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए साल भर का है, वो हर साल 10-15% ऐसे ही बढ़ जाएगा. सो डिपेंडिंग ऑन आपका लाइफस्टाइल, इन्फ्लेशन एक्चुअली बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट. एंड दैट्स वाई अगर इन्फ्लेशन है 6 से 7% का, जनरली आपको फैक्टर इन करना चाहिए. लेट्स से आपका 20 लाख से 25 लाख का पैकेज है, किसी भी सिटी में आप रह रहे हो, ठीक है, आपका एनुअल इनकम फैमिली का 20 लाख रुपया है, तो ऑन एन एवरेज आप 6 से 8% का इन्फ्लेशन मान लो, विच मीन्स अगर आपको फैमिली की लाइफ 20 साल के लिए सिक्योर करनी है, तो आपका 20 लाख इंटू 20, 4.8 करोड़ तो इसमें ही लग गया, ठीक है. उस पर आप इन्फ्लेशन ऐड करो तो इट्स 6-7 करोड़ रुपया, राइट. तो इट बिकम्स अ बिग अमाउंट विच कैन नॉट बी प्लान फॉर जनरली. तो होता है, इसलिए क्या होता है कि आप सेव भी करते हो थोड़ा बहुत, एंड उसके अलावा डिपेंडिंग ऑन द इन्फ्लेशन जनरली आप अपना रिस्क कवर भी एडजस्ट करते हो, राइट. बट रूल ऑफ थंब है कि अगर आप 3 to 4 मेंबर फैमिली है इंडिया के अंदर, किसी बड़ी मेट्रो सिटी के अंदर है, तो कम से कम 30 से 40 साल का अगर एज रेंज है द प्राइमरी इंश्योर्ड पर्सन का, तो आई थिंक 2 से 3 करोड़ रुपया होना चाहिए, और मिनिमम 1 करोड़ रुपया एक टीयर 1 सिटी के अंदर होना चाहिए. टीयर 2 टीयर 3 सिटी के अंदर 50 लाख से लेके 1 करोड़ 2 करोड़ के बीच का होना चाहिए. ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, उसके ऊपर डिपेंडिंग ऑन योर लाइफ स्टाइल इट कैन गो, राइट. ओके. बट या इन्फ्लेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू शुड एक्चुअली फिगर आउट कि आपका इन्फ्लेशन रेंज क्या है. ओके, थैंक यू. माय नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जिन्हें हम इंश्योर कर रहे हैं, पॉलिसी में जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं, उनका क्या रोल है? बेनिफिशियरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं के लिए आप सब कुछ प्लान कर रहे हो लाइफ इंश्योरेंस, राइट. कि यू नो सो दैट बिकम्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट all the life insurance that you're taking, your beneficiaries are clearly defined first thing first, right. कि ये मेरे in the case of my demise, the money should go to the right beneficiary. अगर आपने वो पूरा nomination and that beneficiary declaration ढंग से नहीं किया है, तो your family will just be struggling to get that money, and then आपका whole purpose of actually insuring would not actually make any sense, right. So that's one. So beneficiaries are very important from one, from your point of view to map them, and also depending on number of beneficiaries also आपका cover that is required also go up and down, and so on and so forth. And thirdly, beneficiaries are also important in case of demise. They should be aware of the entire process, how to go about doing it, right. So there's ultimately claim to beneficiaries को ही करना है, correct. So that's why that's where they come in the sort of action, and that's why it becomes important, right. So beneficiaries are extremely important, like I said. ओके, थैंक यू. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए फॉर्म फिल करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, तो एक अंडरराइटिंग प्रोसेस होता है उसके बाद, राइट, फॉर्म सबमिट करने के बाद. सो हाउ डज दैट प्रोसेस वर्क? So, underwriting is something that happens between you submitting the application for life insurance to basically policy issuance to you, ठीक है. And underwriting process के अंदर policy जो insurer है, जो policy issue कर रहा है, this company actually does couple of things, right. One, they actually understand कि okay, what is the risk that I'm getting exposed to by insuring this person. तो let's say Shalu comes to me and says कि अर्पित मुझे इंश्योर होना है, and Arpit is a, let's say, insurance company. तो अर्पित विल लाइक टू अंडरस्टैंड, ओके, शालू की हेल्थ हैबिट्स क्या है, शालू के ऊपर कितना रिस्क है, व्हाट इज शी इनटू, व्हाट काइंड ऑफ वर्क शी डज, अगर वो लेट्स से पुलिस के अंदर है, या फिर वो किसी आर्मी फौज वगैरह के अंदर है, तो माय रिस्क एक्सपोजर इज प्रीटी हाई ऑन शालू. तो दे एक्चुअली गो थ्रू दैट एंटायर प्रोसेस, एंड दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग शालूज लाइफस्टाइल, शालूज हैबिट्स, her working area, and so on and so forth. This process is called underwriting, right. इस पूरी प्रोसेस के बाद they will actually be able to tell you कि hey, we are comfortable giving you a risk cover or not, right. So insurance company reserves the right to actually reject your application at any given point of time, right, until they've issued the policy. कि I will not be able to insure to you because I feel you're a very high risk person, right. So that entire process is called underwriting, and generally what helps is, in order to ensure, most of the times companies will actually take your application, right, unless you are a extremely high risk person, but this will reflect in the amount of premium you pay. So the premium for Shalu could be different from premium for Arpit, even though we might be of the same age, same background and everything, but because Shalu's habits and Arpit's habits are different, right. So this entire process is what is happening during underwriting. So it helps to have healthy lifestyle, it helps to have sort of give full disclosure, and so on and so forth, so that the underwriting can go through smoothly and your premiums can also be low.
Okay, thank you. So next question here I'll ask you कि कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम कई बार करते हैं जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं दैट इज लाइक थ्रेट ड्यूरिंग इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग द इंश्योरेंस प्लान, राइट? तो कौन सी कॉमन Hmm. मिस्टेक्स है जो जिनसे हमें बचना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस प्लान खरीदते टाइम? So one is key, whenever you're buying, quiz the salesperson very well, right? Unfortunately, इंडिया के अंदर अभी भी हम देखते हैं कि सेल्स में बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं होता है a lot of details about the policy, right? So it's very important because right now अपना audience is from a broker company, right? It's very important that we really understand the policy very well and explain the same to our clients, right? Because they should not be actually kept in dark. सबसे पहला point, right? So they should be told about. So from client point of view, they should read through the entire सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, राइट? बट आई अंडरस्टैंड कोई पढ़ता नहीं है उसको, ठीक है, क्योंकि इट्स वेरी लेंदी डॉक्यूमेंटेशन, द लिंगो, द लैंग्वेज इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट? बट फ्यू थिंग्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड एटलीस्ट, जो पॉलिसी, जो आपका आपका जो एजेंट है, जो सेल्स पर्सन जो आपको ऑफर कर रहा है कि सर ये करोगे तो ये होगा, 10 साल होल्ड करने के बाद इतना मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, जस्ट आस्क हिम टू हाईलाइट कि वो एग्रीमेंट में कहाँ लिखा है, एटलीस्ट वो चीजें मुझे दिखा दें। जस्ट एंश्योर कि एवरीथिंग दैट इज बीइंग टोल्ड टू यू, दैट इज रिटर्न इन द एग्रीमेंट समवेयर और दी अदर, ठीक है? तो कैलकुलेशन अगर वो बोल रहा है तो उसको बोलो कि टेबल दिखाओ मुझे, और टेबल में पिन पॉइंट करके हाईलाइट करके दिखाओ कि अगर मैंने 10 साल के लिए 1-1 लाख रुपए दिया है तो 10 साल में 10 लाख रुपए दूंगा, 20 साल बाद मुझे लेट से 20 लाख रुपए मिलेगा, तो कहाँ पे है उसकी कैलकुलेशन, वो देखना बहुत जरूरी है सबसे पहले, ठीक है? सो अंडरस्टैंड दैट एंटायर, एटलीस्ट प्रोमिसेस को देखो कि वो कहीं ना कहीं पे लिखे हुए हैं, ठीक है? सेकेंडली, कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? कुछ पॉलिसीज स्ट्रिक्टली बोलेगी कि लेट्स से अगर आपको कोई टर्मिनल इलनेस है तो हम लोग बिल्कुल कवर नहीं करेंगे आपको। आपको कोई प्रीवियस केस, अगर कोई डिजीज का केस है, कोई पहले बीमारी हो चुकी है, ठीक है, आप उसको रिवील करो, अगर आपने नहीं किया है तो जब आपको पे आउट करना पड़ेगा, या फिर कुछ स्पेशल, दिस हैपेंस मोस्टली इन द हेल्थ केस, राइट, हेल्थ इंश्योरेंस टाइप में। बट जनरली ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज कि इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज वुड ऑल्सो लाइक टू अंडरस्टैंड कि आपका कोई प्रीवियस हिस्ट्री है जिसकी वजह से उनका रिस्क अगर बढ़ सकता है ऑफ योर डेथ, राइट? तो यू शुड एक्चुअली बी वेरी, मतलब कुछ छुपा के नहीं रखना चाहिए, यू शुड एक्चुअली एंश्योर दैट यू रिवील एवरीथिंग एंड सो फोर्थ, दैट्स वन। एंड एंश्योर कि जिस वजह से आप वो ले रहे हो, लेट्स से किसी को टर्मिनल इलनेस है तो ओनली टेक इंश्योरेंस दैट कवर्स फॉर द टर्मिनल इलनेस ऑल्सो। और आज के लाइफस्टाइल में कैंसर एंड ऑल दिस डिजीजेस आर हैपनिंग लाइक लेफ्ट राइट एंड सेंटर, हार्ट रिलेटेड इश्यूज आर हैपनिंग। तो एंश्योर कि जो आप पॉलिसी ले रहे हो उसके अंदर ये सब के सब डिजीज का कवरेज है। आपका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट आपको लेना ही चाहिए क्योंकि अदरवाइज आपका इंश्योरेंस का पॉइंट ही नहीं है, ठीक है? तो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स अ लॉट ऑफ पीपल डू, दे डोंट रीड ऑल these documents very carefully, they just blindly believe the salesperson, they don't look for the exclusions which are there in the policy statement. And like I said, they do not actually reveal the information about themselves, also their history and so on and so forth. So I think these are common and very important mistakes that should not be, that should be avoided actually. And also, I think that we should verify whether the company is registered under IRDAI or not, right? So Yeah, that. yeah, absolutely. That goes without saying, right? Correct. So, one important thing is that generally go with larger names when you go for life insurance, because you also want to ensure that these companies are around for next 20-30 years, right? Because you are probably protecting your life for 20-30 years, while life insurance is a very, very well regulated business. IRDAI regulates it very well. All the brokers do a great job of actually communicating all this information and only bringing the right set of insurance players on the platform and so on and so forth. But it is also important from client's point of view कि they actually look at, okay, the brand is something I trust. I have that psychological trust factor also in this one. Ensure कि okay, they have a IRDAI registration and everything, and so on and so forth. Yes, very important. Thanks for pointing that out. Thank you. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन माय हियर इज कि अगर मैंने कोई प्लान खरीद लिया है बाय मिस्टेक और मैंने उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी एंड आई फाइंड कि जो फीचर्स हैं दैट डू नॉट मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ माइंड, सो हाउ कैन आई डील विद द सिचुएशन? Yeah, so there's always a something called free look period, right? So after you buy the insurance policy, depending on the insurance company, 15 दिन से लेके 30 दिन का एक free look period होता है. You can actually, decide to opt out of it, and within a month itself, you receive your entire money back. पूरा का पूरा पैसा वापस मिलेगा. So that's what you can always opt out for.
Okay, thank you. Now let's come to the part of premium. क्योंकि life insurance plan खरीदना premium regularly हमें pay करने होते हैं. So how we have I think already talked about it. If you can summarize it कि कैसे premium amount कौन से factors है जो premium amount को impact करते हैं? Yeah, so the biggest factor, like I said, is your habits, your lifestyle, right? Habits, hobbies, and all these things are very important. But to keep it simple, I think age is very important. सबसे पहले, right? Same premium for the same cover. Let's say 1 करोड़ रुपए का cover एक 25 साल के लड़के या लड़की को चाहिए, vis-a-vis एक 40 साल के इंसान को चाहिए. वो 1 करोड़ की कवर के लिए प्रीमियम उन दोनों को अलग अलग पे करना पड़ेगा, बिकॉज 40 साल के बाद द रिस्क दैट इंश्योरर इज टेकिंग ऑन यू इज मच हायर, बिकॉज after 40, 50, the probably life predictability is pretty low, right? So एक fit and fine 25 साल के इंसान के लिए that premium is much lower compared to a 40-year-old person, and that's why, and the same premium benefit actually extends over a period of time. So one is age, and that's why जितना जल्दी आप लाइफ में ये रिस्क सॉरी इंश्योरेंस ले सको उतना जल्दी ले लेना चाहिए. सेकंड, ऑब्वियसली योर हेल्थ, आपका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, सो एंड सो फॉर्थ. जनरली 25 से 30 साल के under 30, some of the insurance companies don't even do your health checkup and so on and so forth. They assume that you're fit and fine. So that is also one good benefit जिसकी वजह से आपका प्रीमियम कम हो सकता है. थर्ड इज वेरी ऑब्वियस, आपको देखना है कि आपको कवरेज कितना चाहिए. 1 करोड़ की कवर के लिए अलग प्रीमियम होगा, 2 के लिए अलग होगा, 3 के लिए अलग होगा, एंड सो फोर्थ. सो कवरेज अमाउंट ऑल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फोर्थ इज कि किस टाइप की पॉलिसी है. अगर टर्म लाइफ इंश्योरेंस है तो आप शायद 25,000 रुपए दोगे और 1 करोड़ का प्रीमियम मिल जाएगा, ठीक है. बट इफ यू आर टेकिंग अ परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस एंडोमेंट प्लान जहाँ पे आपको सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है, वहां पे आपको शायद 1 करोड़ के लिए जनरली 10 लाख रुपए का एनुअल प्रीमियम पे करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे 10x का वो होता है. तो 25,000 वर्सेस 10 लाख रुपीज, देयर इज अ बिग डिफरेंस. बट गुड थिंग इज कि वो 10 लाख रुपए का आपको रिटर्न मिलेगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम एनीवेज, राइट. फोर्थ वन इज लाइक आई सेड, हॉबीज, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, स्मोकर हो, यू ड्रिंक, यस, तो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट. सो इनकी वजह से भी आपका प्रीमियम बढ़ता है. च्यूइंग टोबैको, सिगरेट स्मोकिंग, alcohol consumption, ये सब कुछ are actually very critical factors in deciding your life insurance premium. Fine, thank you for pointing it out. So next, let me ask you that how does life insurance factor into retirement planning, and what strategies can individual use to make the most of their policies during retirement? Yeah, so like I started this entire conversation by saying it's the most important thing that you should be doing, right? So सबसे पहले कि अगर आप अपनी लाइफ रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हो, राइट, तो और अगर आपने, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 30 साल तक आप सेव कर पाओगे. लेट्स से आपको 30 साल बाद रिटायर होना है. व्हाट इफ यू आर नॉट एबल टू सेव? दैट इज द बिगेस्ट रिस्क, राइट. 5 साल बाद इनकम कॉन्ट्रीब्यूटर ही नहीं है. सो प्रोवाइडिंग फॉर द रिस्क दैट यू रन, रिस्क ऑफ द लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो वही है इसका, ठीक है, कि रिस्क कवर करना बहुत जरूरी है. अगर आपने वो रिस्क कवर नहीं किया है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो फिर योर ऑल प्लान्स विल गो फॉर अ टॉस. बट लेट्स से यू ऑलरेडी सेविंग और यू इन्वेस्टिंग इनटू अ परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस जहाँ पे आप अपना पैसा, आपको वापस रिटर्न भी मिलेगा, मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा. उस केस में आपको क्या करना चाहिए? आपको एक्चुअली ऐसे प्लान्स लेना चाहिए जो आपको रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ इनकम प्रोवाइड करे, ठीक है. सो देयर इज अ इनकम रिप्लेसमेंट पॉसिबिलिटी कि आपने, लेट्स से आज के टाइम पे आपके पास 50,000 रुपए पर मंथ की इनकम है, ठीक है, और आप 10 साल बाद रिटायर होना चाहते हो. रिटायरमेंट के बाद शायद वो 50,000 रुपए की वैल्यू 1 लाख रुपए हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द इन्फ्लेशन. तो आपको 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम चाहिए होगी, राइट. सो इंश्योरेंस कैन एक्चुअली हेल्प यू एक्चुअली अचीव दैट गोल, राइट. दैट्स वन. सेकंड होता है कि आप अपना मतलब एस्टेट प्लानिंग कर सकते हो. जैसे मैं आपको बोल रहा था बेनिफिशियरीज, राइट. सो एस्टेट प्लानिंग क्या होता है, जहाँ पे आप ये करते हो कि मेरे जाने के बाद जो भी मेरी एसेट्स हैं वो कैसे और किसको मिलेगी, ठीक है. इंश्योरेंस के अंदर there's a clear cut very beautiful structure where you can actually define the beneficiaries very very easily, can segregate your assets
depending, can take two different policies, one intended for one set of beneficiaries, second intended for second set of beneficiaries, and so on and so forth. So it becomes the asset allocation, sorry, the payout of the assets also become very, very easy. So from estate planning point of view also, it's very important. Then, there's also cash value wherein, you can, right after your retirement, you can actually get a lump sum amount, right, which can be given to you, that you can use to invest somewhere, which can give you a monthly income, or you can actually put that into FDs and draw out certain amount of money to support your lifestyle, and so on and so forth. So that can be done. And you can also take, go for a annuity plan with insurer itself. And this fourth one is, wherein it's all psychological ki, yaar, I have I provided good benefits to my family even if I was not there. जैसे कुछ insurers use करते हैं ना कि ना सर झुका है कभी ना झुकाएंगे कभी. So it's basically planning your legacy, right? That even if he's not here, he left us for the family. He left enough assets, and he ensured that even after I'm gone, people are taken care of, people whom I love are taken care of, right? So that actually sets your legacy also, and people actually remember you for all the good things that you've done during your life. So yeah, those are the four key things, right? From a strategy point of view, it's very important that every uh, insurance that you take is aligned with your goals, right? There's no point आपको अगर 5 साल बाद retire होना है, so there's no point of taking a 20 साल का plan, राइट? तो इट वोंट मेक सेंस, राइट? तो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि रिव्यू करो कि आपके रिटायरमेंट गोल्स और पॉलिसी जो है दोनों के बीच में अलाइनमेंट है या नहीं है, ठीक है? जो आपको फैमिली में अगर लेगेसी की बात करें अपन, और अगर आपने फैमिली की रिक्वायरमेंट 2 करोड़ की और आप 20 लाख का इंश्योरेंस लेके चल गए, तो लेगेसी विल बी अ वेरी नेगेटिव वन, इवन दो दे आर गेटिंग 20 लाख रुपी, राइट? सो अगेन दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू शुड ऑल्सो लुक एट ऑल दिस थिंग्स एंड देन स्ट्रेटेजाइज अकॉर्डिंगली. Fine, thank you. And you answered my last question also. So let me just bind up this session. Before that, I request audience, if they have any question, they can bring it in the chat box or they can ask verbally. So we give them time till I request Arpit, if you can summarize the discussion. I want you to focus on more on importance of life insurance. तो क्या टिप्स आप देना चाहोगे ऑडियंस को कि कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ इंश्योरेंस खरीदना और किस चीज का ध्यान रखना चाहिए when we buy it? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आज के टाइम उनका पे चला हमारा एंडोमेंट क्या प्लान्स को लेके I think somebody tried asking a question. You may continue. We may drop it in chat box. Yeah, sorry. Sure. So I think सबसे पहले तो एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एक न्यूज कैंपेन चलता है जनरली कि एंडोमेंट प्लान्स आर नॉट गुड फॉर पीपल एंड सो एंड सो फोर्थ. उनके अंदर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है. ऑल दैट इज not very, you should not pay a lot of attention to it, क्योंकि endowment plan serves one particular objective for the clients very well, and वो है कि कुछ clients ऐसे हैं जिनको अपनी लाइफ में रिस्क कवर करने के अलावा कुछ पैसा वापस भी चाहिए होता है, ठीक है? तो वहां पे to create such kind of structures, it is slightly expensive, and that's why endowment plans actually are very popular in India, right? आप LIC देखो, सबसे बड़ा एसेट मैनेजर इंडिया के अंदर LIC है. उसके अलावा some of the other insurance companies are the largest asset managers across the world also, right? So this is very, you should never fall for all this kind of negative propaganda that keeps circling around कि ये endowment plan waste of money है, waste of time है and all. क्योंकि हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है. जिसको इंश्योर म्यूचुअल फंड चाहिए वो म्यूचुअल फंड खरीदेगा, जिसको लाइफ प्रोटेक्ट करनी और कुछ पैसा भी चाहिए वो इसको करेगा, क्योंकि सिंपल टू अंडरस्टैंड वो भी होते हैं. तो इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू टेल क्लाइंट्स कि व्हाई you are doing life insurance, for what reasons, right? And then you understand their questions also कि मुझे सिर्फ टर्म लाइफ इंश्योरेंस चाहिए या फिर परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस चाहिए. तो ये अंडरस्टैंड करके if you actually give a right product to your clients, I think they will really love it, and their experience also will be very important. Like I said, life insurance is one of the most important investment that you should be doing. I seriously call it investment. मेरा पहला सैलरी आने के बाद, जब when I started working at the age of 23, सबसे पहले मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिया अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए, बिफोर इवन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, राइट? कि वो रिस्क पहले कवर हो जाए तो आई विल बी साइकोलॉजिकली फ्री, एंड देन उसके बाद आई विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग. सो दैट इज अ बेनिफिट वी ऑल शुड कम्युनिकेट टू आवर क्लाइंट्स ऑल्सो. So life insurance is very important from that point of view. Second, obviously, it provides you very well defined payout structure and so on and so forth. So gives you a peace of mind also that things are taken care of even if I'm not around, from that point of view.
So I think, yeah, overall, everybody, their first investment should be life in insurance, right? Be it term life insurance or, your LIC kind of endowment plans or whatever it is. Like that depends on you and your personal sort of choices. But life insurance is mandatory for everybody. Okay, Arpit, thank you. So that's the message what I got from you is the life insurance really it's very important because we never know life what happens next. So securing our loved ones is very important. And to audience, please make sure कि जब आप life insurance plan खरीद रहे हो तो आप अपने terms and conditions बहुत ध्यान से पढ़ो and make a wise choice. See कि आपकी क्या requirements है, क्या need है, and then make a choice. So thank you Arpit for joining us today. Let me end this session here only. Thank you. Thank you so much, Shalu. My pleasure. It was great joining you guys. Thank you so much. Thank you. Thank you, audience, too. Goodbye.